proclaim to the world that yes, I am now ready to welcome a child into our lives. I think we have to be realistic that वो first month में हमको precautions भी ज़्यादा लेने हैं, उस first month में हमें थोड़ा सा realistic रहना है. And from there on, every 2 days or 4 days, some blood tests, beta HCGs are done, which give us a realistic idea that whether this pregnancy is growing well. Then at around day. So I congratulate you on your great result, and I would say that अगर हम ये basic precautions लेंगे, basic tests करेंगे, in my opinion. Hi friends, I'm Dr. Shweta Goswami. You're watching Fertility Fridays, where we try and welcome hope into your lives. I'm a fertility consultant and obstetrician at Zeeva Fertility in Noida. We have our centers at Sector 63 Noida, Sector 104 Noida and Greater Noida. So I would want to talk about a general topic today which is pertinent to each one of us, and that is that once we are diagnosed with our happy news of early pregnancy, we've got a home pregnancy test positive or a beta HCG positive. Now there are thousands of questions coming in our mind. हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए. So I just thought I'll make a quick video about what the usual questions are there in the minds of everybody. So pehli cheez, I think you've crossed a big milestone today. Many congratulations. Getting a pregnancy test positive is a big step in achieving, of course, welcoming a wonderful baby into our lives. However, what we need to know is basic precautions हमको क्या करने हैं. What is the realistic things that we should be thinking of? So first of all, I would just want to say here that we should be realistic that there is about a 5 to 6% miscarriage rate in anybody who conceives. So I'm sorry, I'm starting off on a negative note here, but the word of caution is that once we get a pregnancy test positive, whether it is a urine test or a beta HCG, we say that's wonderful. However, nature hasn't decided yet कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है. नेचर अभी भी अपना चेक मैकेनिज्म से चेक करना चाह रही है कि बेबी जो है वो हेल्दी है कि नहीं, उसमें कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल इशू तो नहीं है. एंड देयरफॉर बिफोर वी ब्रिंग इन बिग कंग्रेचुलेशंस इन आवर माइंड or proclaim to the world that yes, I am now ready to welcome a child into our lives. I think we have to be realistic that वो first month में हमको precautions भी ज़्यादा लेने हैं. उस first month में हमें थोड़ा सा realistic रहना है that we all want healthy babies and we want healthy conceptions, and therefore it could be there could be a small risk of a miscarriage which should be wary about. And just to be realistic, that what are we looking at? Therefore, in each pregnancy nowadays, we typically advise कि हमें at least beta HCG monitoring करना चाहिए. We should be doing blood tests right at the onset of diagnosis. Usually the kits and blood tests are so sensitive that once you've just crossed 1 or 2 days of your missed period, the test tends to come positive. And from there on, every 2 days or 4 days, some blood tests, beta HCGs are done, which give us a realistic idea that whether this pregnancy is growing well. Then at around 5 to 6 weeks of pregnancy, मतलब pregnancy जब अभी 15 days overdue होती है, तो हमारे अल्ट्रासाउंड सब इतने सेंसिटिव है कि अल्ट्रासाउंड पे एटलीस्ट डायग्नोज हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी ठीक ठाक लोकेशन पे है कि नहीं, क्योंकि अगेन वेरी रेयरली स्पीकिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकता है. सो एट द 5th और द 6th वीक स्कैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन टू मेक श्योर कि प्रेगनेंसी सिंगल है, ट्विन है, यूट्रस में है, एक्टोपिक तो नहीं है, एंड अभी तक प्रोग्रेशन ठीक चल रहा है कि नहीं. उसके बाद there is another ultrasound scan that is done at around 7 to 9 weeks of gestation, which is about 2 months of completed pregnancy. And ये सब हम काउंट करते हैं लास्ट साइकिल डेट से, नो मैटर किस तरीके से प्रेगनेंसी हुई है, किसी भी प्रोसीजर से हुई है या स्पॉन्टेनियस हुई है. एंड यूजुअली एट दिस 8th week scan is when we actually congratulate a couple, क्योंकि हम कहते हैं अब अगर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की ग्रोथ ठीक लग रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हार्ट बीट अपीयर हो गई है, सो कार्डिक एक्टिविटी का प्रेजेंस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी हेल्दी स्टेप ऑफ अ हेल्दी प्रेगनेंसी. एंड देन वी से दैट टिपिकली 95% ऑफ प्रेगनेंसीज फ्रॉम हियर will move well to term, which means अगर हमारा हार्ट बीट आ जाता है, that is the day on which we congratulate everybody and say कि yes, everything is looking good. Now you can start telling your close relatives. जैसा कि पुराने ज़माने के डिक्टम रहा है, I also personally feel that 3rd month completion, which is end of 1st trimester, when you've completed 12 weeks, is when a basic anomaly screening is also done for the pregnancy, and उसके बाद it's probably a good idea to confirm to the world.
सो दिस इज हाउ मेडिकली वी मूव ऑन टू असेसिंग कि प्रेगनेंसी ठीक चल रही है कि नहीं. जैसे ही हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है, हमारे मन में क्वेश्चंस आता है, मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं, कितना चलना ठीक है, सीढ़ियां चढ़ना ठीक है कि नहीं है. तो उसके बेसिस पे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ओवरऑल वी ट्राई एंड से दैट जो चीज़ें वार्म इन कंसिस्टेंसी होती हैं, सो मोर ऑफ नट्स एंड सीड्स एंड थिंग्स लाइक कैफीन, टी, कॉफी, and then some fruits like papaya and pineapple are said to be avoided in the first trimester. उसका रीज़न ये होता है कि ये थोड़े से हो सकता है अबॉर्टिफेशंट हो. इसका मतलब इनकी वजह से एक हल्का सा रिस्क ऑफ मिसकैरेज बढ़ सकता है. तो अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड कर पाएँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो दैट्स ग्रेट. उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हमारे ओवरऑल कोई भी फूड्स हैं, लेग्यूम्स हैं, इवन छोले हैं, राजमा हैं, वी सी नो हार्म इन टेकिंग एनी ऑफ देम. इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जहाँ तक फिजिकल एक्सर्शन का सवाल है, ऑब्वियसली विगरस एब्डोमिनल या फिजिकल एक्सरसाइजेस हम कहते हैं इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए. इफ समबडी कैन अवॉइड गोइंग लॉन्ग डिस्टेंस लाइक आउट स्टेशन अगेन इन जस्ट दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी विच वी कॉल एज 4 to 8 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो हेल्पफुल होता है. और उसके अलावा मेंटेनिंग अगेन अवॉइडिंग बिग टाइम फिजिकल एक्सर्शन लाइक vigorous exercise, maybe intercourse, lifting heavy weights is a good idea to do that. Apart from that, whether you're walking, whether you're going for a stroll, whether you're going for a basic staircase, you're using that, you're going to your office work, all this is usually not at all contraindicated. So we must keep our pregnancy as normal and healthy as possible, except for these basic precautions. In a normal pregnancy, absolutely. Even in a fertility treatment pregnancy, चाहे ये IUI या IVF pregnancy भी है, तो भी इससे ज़्यादा हमारे को बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो होता है रियलिज्म, कि थोड़ा सा हमारे को वेट एंड वॉच करना है कि प्रेगनेंसी ठीक से प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं, क्योंकि उसका अदरवाइज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे पे बहुत ज़्यादा आता है. सो इफ़ वी टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड वी टिपिकली क्रॉस दीज थ्रेशोल्ड सक्सेसफुली, 4-5 वीक्स पे बीटा एचसीजी पॉजिटिव आना, 5-6 वीक्स पे एटलीस्ट यूट्रस में एक सैक नज़र आना, 8-9 वीक्स पे एक हेल्दी प्रेगनेंसी पता चलना, एंड देन इंपॉर्टेंटली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन जिसको हम 12 वीक स्कैन कहते हैं, वो फर्स्ट एनॉमली स्कैन होता है. बेसिक अगर हमारी ये सारी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं तो हम कहते हैं वी आर ऑन टू द जर्नी ऑफ अ हेल्दी प्रेगनेंसी, जिसमें लेस देन मे बी 1% कोई रिस्क होता है कि आगे हमारे को उसके हिसाब से देखना पड़े. So I congratulate you on your great result, and I would say that अगर हम ये basic precautions लेंगे, basic tests करेंगे, in my opinion, I think we have a first trimester welcome. So हमारे viewers के कुछ questions हैं, मैं एक एक करके थोड़े questions को answer करने की कोशिश करती हूँ. So सैट कह रहे हैं, मैम मुझे एग डोनर या स्पर्म डोनर से IVF कराना है, कितना खर्च होगा? 2 बार IVF फेल हुआ है. तो सैट मेरी तरफ से पहली चीज़ तो ये असेसमेंट होना चाहिए कि IVF फेलियर का कारण क्या हो सकता है, क्या वो एग या स्पर्म इशू है, उसी के बाद डोनर ऑप्शंस पे जाना चाहिए. दूसरा देखिए, IVF का खर्चा वही IVF कॉस्ट होता है, जो डोनर स्पर्म डोनर एग होता है आजकल बाय लॉ हमें अपने रिलेटिव्स को प्रेफरेबली उसके लिए लाना होता है, तो उसमें कोई बेसिक कॉस्ट ही बढ़ती है, बट मेनली IVF का ही खर्चा हमको सोचना पड़ता है. बट मेरी ओपिनियन ये रहेगा कि सबसे पहले एक अच्छी तरीके से वैल्यूएट होना चाहिए कि IVF फेलियर का कारण क्या हो सकता है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करें. So RSZX is saying, I have complex fibroadenoma. As I take Proganova, it starts to pain. Can I continue conventional IVF or natural? So see, if you're having a fibroadenoma in the breast, we must try and rule out any malignancy. So I hope that checkup has been done. There is no FNAC, etc. required. It is true that with hormones like Proganova and estrogen, the fibroadenoma may be more painful. So to answer your question, see, a conventional IVF is something we would definitely prefer. The question will be whether you will be able to tolerate it. So I think if with hot fermentation, analgesic NSAIDs, you think that you can manage it, you must definitely try a conventional IVF. I personally am not a great advocate of natural IVF, cycles until it's the only option we're left with. So Ruhi Siddiqui is saying, ma'am, I have low AMH. मेरे लिए क्या best treatment option हो सकता है for conceiving? Should IVF be feasible? So रूही, वो हमारे AMH के लेवल पे भी डिपेंड करता है, पिछली ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करता है. एंड लो AMH हमारी ओवरऑल एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बताता है कि चाहे हम नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, IUI कर रहे हैं, IVF कर रहे हैं, तो रिजल्ट थोड़ा लोअर साइड पे हो सकता है. AMH अपने आप में कोई ये ऑप्शन नहीं बताता कि आपको IVF ही करना है. तो मेरे हिसाब से अगर अच्छे से बाकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, ट्यूब्स ठीक हैं,
तो हम इवन नॉर्मल तरीके से ट्राई कर सकते हैं. इट मे टेक यू लॉन्गर, बट लो AMH के ऊपर वर्क करके हम डेफिनेटली इवन नेचुरल कंसेप्शन या IUI के थ्रू कंसीव कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. And Dabba Samayal is saying, Doctor, please tell me after embryo transfer, should I take 3 months injection? Now, Samayal, now that's a difficult answer. See, because it's a basically doctor to doctor preference कि उनको क्या करना है. We typically don't give injections to everybody post transfer. But अगर आपके डॉक्टर ये कह रहे हैं तो उस हिसाब से सोचना होगा. ठीक है. Thank you so much for your patient hearing, and any questions, please do write in the comment section. So if you have any questions around this, please feel free to call us or message us on the comment box below, and I'll be more than happy to answer your queries. Thank you.